Good morning, class. Good morning, ma'am. Arush is so sad. It is raining outside. That is why. No, ma'am. Here it is not raining. There it is not raining. How come? Where are you? Not in Bareilly? No, ma'am. Okay. Fine. Let everyone join. Yesterday we left the class on the revision part only. So today also we'll do the same. Right? Okay. And we will do revision of which chapter? बेटा हिस्ट्री चैप्टर 2. ये कोई डॉट डॉट करके ज्वाइन करना मांग रहा है. व्हाट टू डू? Only 4 students are there. Fine. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Ma'am, how are you? Good, good. Good morning, ma'am. Good morning, Pradyumsh. Let everyone join. I'll be sharing the screen with you all. I have made questions for the revision, chapter 2, right? Socialism. Socialism in Europe and the revolution. मैम कल भी कुछ क्वेश्चन करे थे. हाँ कल भी हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे. So I'm sharing the screen here with you all. Can you all see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So one by one, I'll be asking you. You tell the answers for these terms that which I have written on the. We write first of 5, ma'am. We will write and then we will send on the group. That way also you can do. Right? Ma'am, so we have to write or orally only? Write it down and then send it on the group. Then I'll ask you what you people have written. Right? Are you writing, class?
Ma'am, is it San Nicolas 2 or 11? Hmm? It is 2, beta. Ma'am, is it? Wait. It is 2. Tsar Nicholas II, second. Right? Yes, ma'am. Now it's correct. Acha, Adarsh is in the meeting. Just a second, beta. I'll take Adarsh. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Has Adarsh taken entry in the room? No. No, ma'am. Okay. Good morning, ma'am. Good morning, Adarsh, beta. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Manshraj. Good morning, ma'am. Good morning, Ishan. Ma'am, who is yes, ma'am? Beta, Yashnath is the second device with which I have shared the screen here. Okay, ma'am. Hmm. I thought, ma'am, it's someone else who had sent me. No. Good morning, ma'am. Good morning, Bushra, beta. Ma'am, have you saw the message on the group? Which message, beta? Ma'am, Niharika Gupta. Who is? Arey, we will talk about this. Beta, forget. Maybe by mistake. Yes, ma'am. Hmm. No, ma'am, it's on class 10th also. कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे बेटा. Okay, ma'am. समझ तो पानी रहा था. Okay, those who have joined late, I have shared some questions over here. These are terms that you need to define. Do them. First 5 you write and then share it on the class group. Then the remaining one you write and share it on the class group. And then I'll ask you what you have written for the following. Okay, ma'am. Right? Do it Ma'am, as any Okay, five or ma'am. ma'am from all we have to do. First 5 you will write. Then I will ask you. Then the Okay, remaining ma'am. one you write. Huh? And side by side, I'm giving you other questions as well. Ma'am, Yes, ma'am, beta. we need to write only 1 mark definition, no? You have to define them for 1 marks only. Ma'am, this is my first class. This is Karthik. This is your first class Yes, mean? ma'am. Since morning first class. Ma'am, I have. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You could not join or you got up late in the morning today? Ma'am, there's an network issue, ma'am. That's why I'm not able to join. Acha. Well, because maybe it Yes, is ma'am. written because Yes, ma'am. Ma'am, it's weather, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, it's raining outside. I know. Yes, Divyansh, you're saying something? No, ma'am, I said it was the same in the last class also. Network problem. Exactly. Not many children were facing problems.
Ma'am, in D part, what we have to do? You have to tell who was Tsar Nicholas II. मैम हाँ जी बेटा। मैम मैं आंसर लिख के आपके पर्सनल नंबर पे सेंड कर सकता हूँ? नहीं, पर्सनल पे मत सेंड करो, ग्रुप में ही सेंड कर दो। हम जब सब भेजेंगे उसके बाद ही बताएंगे सही है कि नहीं है ना। एंड सेंड वो वाला है नहीं है। क्या चीज? मैम वो वाला फोन अभी है नहीं जिसमें ग्रुप है मैम। अच्छा, तो आप पर्सनल पे भेज दीजिए। हम्म। मैम इन द थर्ड वन मैम डूमा में वो भी बताना है कि वो किसने फाउंड किया था। हाँ, बता दो कि डूमा क्या थी और किसने फॉर्म करा था, दैट्स इट। ओके मैम। Ma'am, in third part, I have just wrote that what was Duma. आप ये भी ऐड कर सकते हो, हु फॉर्म्ड इट, है ना। Ma'am, 5 questions done. May I send? Yes, send. Let me see who are sending. I'm pretty scroller. Doing that. अच्छा. Now is Yes it? ma'am. Oh. I hope you all are writing, beta. Yes, ma'am. Yes ma'am. Okay, fine. Ma'am, send. Checking.
Abhi, your fourth definition is not correct. M of San Nicholas. Yes, it is not correct. What is to be written? Anybody in the class who can tell who was Tsar Nicholas II? Sanidhya? Ma'am, he was the emperor of Russia and its empire in 1940. Yes, he was the Russian ruler, the king of Russia. And then Stalin that you have written, Abhi, that is also not correct. Ma'am, you told us, ma'am, we especially have to write, ma'am, mention that, ma'am, he was the emperor of Russia and its empire. Yes, I know. Then, Abhi, fifth one is also not correct. Okay, ma'am. Correct them. Sanidhya, you have also sent your answers? Ma'am, I am writing the sixth one. Okay. What about others? Ma'am, sending. Ma'am, in 2 minutes. Adarsh, Manjot, are you writing, beta? Today, Manojas has not attended any of the classes. No, ma'am. Okay. Ma'am, in ma'am Tsarist, ma'am, I have written the Tsarists were modernist reformers with the Russian Empire in late 19th and early 20th century. No. Tell it again, Karthik. Ma'am, I have written that the Tsarists were modernist reforms within the Russian Empire in late 19th and early 20th century. Ma'am, they were the Muslim The reformers in Muslim Russian Empire. reformers. They were the Muslim reformers, and Yes, simply ma'am. you can write this. Ma'am, who wanted to Okay, modernize. ma'am. Okay. These are the general terms that have been used in the chapter. So you should be aware of these terms, right? Manjot, are you writing? Yes, ma'am.
Arush, have you sent? Ma'am, I am on the last one. Okay, very good, very good. We have to do all then send or first 5 or 6? All you have to do, but first 5 you send and then you continue with the remaining one. The first one, I don't know. Okay, the next one you do? Okay, ma'am, the last. Hmm. Others. Ma'am, I have sent on your personal one. Okay. Checking. You can simply write that Lenin was was one of the revolutionaries of Russia, and he was the one who led the Bolsheviks party. Right? Yes, ma'am. Oh. I have written that Lenin was the leader of Bolshevik party. You have written correct. But you can add this revolutionary wala thing in that, okay? Okay. Then Duma was the consultative body. Ma'am, consultative body with quasi-legislative function. With? Ma'am, with the legislative function. With the legislative functions. Very good. Ma'am, have you stopped the screen share? Yes, Karthik. Ma'am, I have 5. I'll just check. Ma'am, I'm not able to see the question, ma'am. Why you are unable to see, beta? Can others see the questions? Ma'am, please remove this keyboard Yes, and you can post the screenshot on the group. Ma'am. Yes. Ma'am, I'm unable to see. I don't know, Karthik. Others are able to see. Everyone is able to see the screen. Sanidhya, can you see? Yes, ma'am. Ma'am, a voice is not coming. Maybe some problem, beta. Ma'am, Abhinav is sending it to the group. He can see on the group only. Beta, Abhi has sent the screenshot. You can check from there. Write the answers there from. Ma'am, can I join again? You can rejoin. I'll take you. No issue. For Duma, you can also write that it was the Russian parliament which was created for the first time in 1905. Right? मैंने तो ये मेंशन किया कि मैम वो 3 बार बनी थी और 3 बार डिसॉल्व हो गई। नहीं, हम तो सिर्फ सिंपल डूमा पूछ रहे हैं, हमने पूछा ही नहीं कि उसके साथ क्या उसका हिस्ट्री रहा था, क्या नहीं रहा था. इट इज जस्ट अ टर्म दैट यू हैव टू डिफाइन. सो द बेस्ट डेफिनेशन फॉर डूमा यू कैन राइट इज that it was the Russian parliament which was created for the first time in 1905. ठीक है मैम? कंसल्टेटिव बॉडी वो भी ठीक है, right? Rest what have you written?
Emperor of Russia. स्टेलिन के लिए आप ये लिख सकते हो that he was the Russian communist leader who introduced collectivization program. Whenever we talk about Stalin, we always say that he was the one who initiated the collectivization program in the country, right? And he was a communist leader. He headed the party after the death of Lenin. That also you can write. That he became the leader of the Bolshevik party after the death of Vladimir Lenin. And he is known for the collectivization program that was introduced by him in Russia, right? Yes, ma'am. चलिए, कार्तिक ने रिजॉइन नहीं करा है, उनके भी नेटवर्क इश्यूज हो रहे होंगे। मैम ये भी चेक कर लीजिए, कुलक्स वगैरह जो हैं तीनों के, वही 8 ही करें। हाँ वही कर रहे हैं बेटा हम। कुलक्स जो था हाँ, जो आपकी लास्ट की जो लाइन है वो ज्यादा परफेक्ट है कुलक्स के लिए। कुलक्स वाज द टर्म दैट वाज यूज्ड फॉर द वेल टू डू पीजेंट्स इन रशिया। सानिध्या ठीक है? Then next is Bolshevik. It was the Bolsheviks के आप सिंपल लिख दो कि it was a communist party of Russia which was headed by Vladimir Lenin, right? मैम वो भी तो लिख सकते हैं कि मैम वो क्या चाहते थे मैम। नहीं, जब हम डिफाइन करते हैं तो डिफाइन में हम इतनी डिटेलिंग नहीं लिखते हैं, है ना। डेफिनेशंस में हम टू द पॉइंट लिखते हैं कि भाई ये हमें एग्जैक्टली क्या बताती है, ठीक है? यस मैम। हाँ, फिर है हमारा कलेक्टिवाइजेशन। मैम यू आर ऑन म्यूट। के लिए लिख सकते हो that collectivization was a program which was initiated by Stanley and under this program all the lands were collectivized, they were consolidated and redistributed among the farmers, ठीक है? मैम वो रिडिस्ट्रीब्यूट थोड़ी हुए थे मैम, उन्होंने खाली ये उनसे कहा था कि सब एक साथ कल्टीवेट करेंगे और जो फिर प्रॉफिट होगा वो शेयर कर दिया। ये पहले ये हुआ था कि उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, पर क्योंकि सारे लोगों ने अपने लैंड्स को जो है कंसोलिडेट नहीं करा था, इसलिए फिर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था। उसको फिर केवल जो है उनपे जो है कल्टीवेशन के परमिशन दे दी गई थी कलेक्टिवली। आप इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन ये ले सकते हो कि दिस कलेक्टिवाइजेशन वाज अ प्रोग्राम व्हिच वाज रिलेटेड टू द लैंड कंसोलिडेशन इनिशिएटेड बाय स्टालिन, राइट? Yes, ma'am. And what about Socialist Revolutionary Party? Has anyone written about this? About what? Socialist Revolutionary Party. Ma'am, I have done only 8. Ma'am, I am doing. What about others?
Those who are there in the meeting, please send beta. Vanshraj, Pradyum, Shishan, Divyansh, send your answers. But I have shared some. I have shared 2 screenshots on the class group. These who are there in the class, please send your answers, beta. How do I know that you are doing it? Vanshraj Gill, are मैम you? हाँ. मैम सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी वही जापान वाली थी, वो फ्रांस वाली? रशियन पॉलिटिकल पार्टी जो थी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, सबसे पहले तो वही बनी थी ना 1900 में. मैम फिर वो सोशलिस्ट पार्टी थी खाली फ्रांस की जो थी. हाँ हाँ मैम मुझे एसपीडी वगैरह. हाँ, रशिया की, फ्रांस की नहीं, रशिया की. मैम फ्रांस की. रशिया की बेटा, रशिया की सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी रशिया की थी, जो कि जो पीजेंट्स वगैरह थे उनके उनके राइट्स के लिए लड़ रही थी. नहीं मैम सोशलिस्ट पार्टी. हाँ, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी हम पूछ रहे हैं बेटा इसमें. मैम खाली एक सोशलिस्ट पार्टी भी थी मैम, वो जो एसपीडी वगैरह थी, लेबर पार्टी जैसे इंग्लैंड की थी मैम. वो आपकी चेका थी. मैम वो था ना हमारा सपोर्ट फॉर सोशलिज्म वाला, मैम उसमें था वो. हाँ तो चेका थी ना वो, चेका. मैम जैसे उन्होंने सेकंड इंटरनेशनल बनाई थी मैम वैसी. हाँ, जैसे जो चेका था, चेका जो थी वो सीक्रेट पुलिस थी बाय द बोल्शेविक्स, जो कि क्रिटिक्स को जो है सप्रेस कर रही थी, है ना. रक्षित सोलंकी, आर यू देयर? ईशान जौहरी, आर यू देयर? Yes, ma'am. बेटा सेंड योर आंसर्स बच्चा. Yes, ma'am. Sending. मैम आप तो 8 ही बच्चे हैं. हाँ वही, पता नहीं क्या चक्कर है. मैम बारिश तो बाहर हो रही है, क्लास अंदर है. क्या कर सकते हैं बताओ. अब जो जिनका नहीं करने का मन है, दे विल गिव ऑल द एक्सक्यूजेस, सर्वर डाउन है, ये है वो है. जो करना चाहते हैं वो कर ही रहे होंगे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करेंगे. मैम मैं तो मोबाइल डेटा पे ही करता हूँ. और बेटा सबसे बड़ी बात ये आंसर्स अगर आप लिखते हो तो हम भाई, हमारा सिलेबस इज डन, वी नीड टू रिवाइज. और इस तरीके से अगर हम रिवाइज करेंगे तो हमें लगता है कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है टू रिवाइज एवरीथिंग, है ना. इजंट इट? यस मैम. यस मैम. पर अब बच्चे ऐसे हैं, दोज हु डोंट वांट टू डू, क्या कर सकते हैं, कांट हेल्प इट एज वेल. पता नहीं क्या चाहते हैं लोग, करना नहीं मांगते हैं कि क्या है. हमें यस लगता है मैम हमारी क्लास. मैम हमारी क्लास की सबसे कम है. हाँ, बी क्लास में बच्चे नहीं आते, ए में भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ आती है, सी में तो खैर आती है. उनकी तो बात ही अलग है, सुपीरियर बच्चे हैं.
नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आप लोग भी अच्छे बच्चे हो, आप भी सुपीरियर हो, है ना, ऐसी बात नहीं है, ऑल आर इक्वल. It is just that on the basis of marks they have been segregated, right? और मैम वही तो, मार्क्स कितने आते हैं? हमारी क्लास में कोई प्रांजल है क्या? नो मैम. Okay, Divyansh. Ma'am, Central 10. I have just seen. Very good. Very good. Some Pranjal is trying to enter the class. Is in the waiting room. मैम वो आपके नेक्स्ट क्लास का हो. नहीं, नेक्स्ट क्लास में तो कोई प्रांजल है ही नहीं हमारे साथ. कुछ तो गड़बड़ है. कुछ तो नहीं है. हाँ मैम माइट बी प्रियांश. विच प्रियांश? प्रियांश अपनी क्लास का? प्रियांश अगर यस मैम. Yes, ma'am. बट प्रांजल लिखा हुआ है. लेट मी सी. मैम 10 तक सेंड कर दिया मैम, चेक कर लीजिए. आपको ठीक है. ठीक है. ठीक है. हाँ बेटा, वेल्दी की स्पेलिंग प्रद्युम्न, इट शुड बी WEALTHY वेल्दी. ओके ओके मैम. मैम वो जल्दी जल्दी में हो गया. कोई नहीं, आई अंडरस्टैंड. मैम कार्ल मार्क्स में ये भी लिखूं कि वो उन्होंने क्या क्या कही थी. कार्ल मार्क्स कौन थे, बस ये लिख दो, सिंपल.